Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will do adverbs. Now think of some words and pen down any 5 sentences that tell us how an action, any action, is done. For example, Sheetal dances gracefully. Here the word gracefully is telling us that Sheetal dances gracefully. कुछ वर्ड्स आपको सोचने हैं और उनको लिखना है उसके बारे में 5 सेंटेंसेस कि जो एक्शन हुआ है, कोई भी एक्शन, वो कैसे हुआ है. जैसे शीतल डांसेस ग्रेसफुली, शीतल ने कैसे डांस किया, ग्रेसफुली. तो इस तरह से आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखने हैं. नाउ डू राइट डाउन द वर्ड्स दैट शो हाउ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी डन. नीचे जो वर्ड्स लिखे हैं आपको ये बताना है कि इनको कैसे किया जा सकता है. ठीक है. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अमर वॉक्स ब्रिस्कली इन द पार्क. अमर ने क्या, अमर कैसे वॉक करता है पार्क पे, ब्रिस्कली. अंजलि वॉज वॉकिंग एट अ वेरी ब्रिस्क पेस in the park. Ashi was walking quite briskly in the park. The words briskly tells us how the action walk was taking place. क्या पता चल रहा है briskly से कि जो action walk करने का जो action है वो कैसे हुआ है. The word very tells us something more about the adjective brisk. और very जो हमारा adjective brisk है उसको और डिस्क्राइब करता है. द वर्ड क्वाइट टेल अस समथिंग मोर अबाउट द एडवर्ब ब्रिस्कली. द वर्ड्स ब्रिस्कली, वेरी, क्वाइट आर एडवर्ब्स. Thus, an adverb is a word that tells us something more about a verb, an adjective or an adverb. Adverb क्या है? जो हमें verb के, adjective के या adverb के बारे में कुछ और अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करता है, कुछ और अच्छा हमें उसके बारे में बताता है डिटेल में. नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. देयर आर 6 मेन काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. लेट अस हैव अ लुक एट देम एंड देयर फंक्शंस. नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, फंक्शन एंड एग्जांपल. एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन. एग्जांपल, वी शुड स्पीक पोलाइटली. एडवर्ब ऑफ प्लेस tell us where something happens. The teacher has gone out. Adverb of time tell us when something happens. I will go in the evening. Adverb of frequency tell us how often an action takes place. Frequency से क्या पता चलता है कि action कितनी बार हुआ है. She often visits the church. Adverb of degree tells us about the intensity of degree of an action or a quality. The weather is absolutely perfect. Interrogative adverb asks a question. Interrogative question put up करता है. When will you come to meet me? Now formation of adverbs. We can form adverbs usually by adding ly or fully to the adjectives. Some adverbs are formed without ly. For example, now direct speech, indirect speech. Foolish, foolishly. Sweet, sweetly. Quick, quickly. Ready, readily. Hurry, hurriedly. Lazy, lazily. Able, ably. Commendable, commendably. Single, singly. Position of adverbs. The position of adverbs keeps changing as per the context and the emphasis और फोकस रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस. सेंटेंस में जब जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है एडवर्ब की पोजीशन चेंज होती है. एग्जांपल्स, आई गो फॉर अ वॉक रेगुलरली. रेगुलरली आई गो फॉर अ वॉक. आई रेगुलरली गो फॉर अ वॉक. आई गो रेगुलरली फॉर अ वॉक. इन द अबव सेंटेंसेस द पोजीशन ऑफ रेगुलरली इज करेक्ट इन ऑल द सेंटेंसेस. जितने भी सेंटेंस में रेगुलरली जहाँ भी यूज़ किया है वो करेक्ट है, बट द emphasis इज डिफरेंट इन ईच सेंटेंसेस. रिमेंबर, adverb
to comes before a verb and an adjective. Example, she sang too beautifully. He works too fast to match my speed. If to comes after the verb, it is probably a disjunct meaning also and is usually set off with a comma. Example, Jaspreet works hard. She works quickly too. The adverb to is often followed by an infinitive. To infinitive से भी to को infinitive से भी follow किया जाता है. Example, she runs too slowly to win the race. Another common construction with the adverb to is it is followed by a prepositional phrase. Prepositional phrase से भी इसको follow किया जाता है. For the object of the preposition followed by an infinitive. The adverb to is also followed by a prepositional phrase. The structure to be followed will be. Example, the milk is too hot for a baby to drink. The adverb enough and not enough usually take a post modifier position. Example, is that music loud enough? These dresses are not big enough for her to fit in. In a room full of people, you must remember to speak loud enough. The adverb enough is often followed by an infinitive. जो enough हम यूज़ करते हैं ये अधिकतर किससे फॉलो किया जाता है? इन्फिनेटिव से. Example, she didn't run fast enough to win. Though when enough functions as an adjective, it can come before the noun. अगर एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन कर रहा है तो ये नाउन से पहले आ सकता है. एग्जाम्पल, डिड शी गिव अस एनफ टाइम? नाउ टेल, लुक एट द पिक्चर इन योर टेक्स्ट बुक एंड फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब्स. स्पीक द सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ योर क्लास. बुक में जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर बनी है उससे सेंटेंस को फ्रेम करिए एडवर्ब यूज़ करते हुए और फिर जो है क्लास में उनको बोलिए. आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे. दिस इज़ योर एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट.